Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, ठीक है. So just wait for 1 minute, है ना? Let the students join. Just wait for 1 minute.
Yes, so we can start now. I'm just sharing you the PPT first. Word file. Yes, tell me the Word file is visible to all of you. Yes, Word file is visible. Please just respond, any one of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am now moving. कल कुछ याद है हमने कौन सी क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था? You remember which question I have completed? I think we were on. Yes. क्वेश्चन 17 हमने कंप्लीट कर लिया था, 16 भी हो गया था, 18 भी हो गया था, 18 तो हमने परसों ही कर लिया था, है ना? ओके, के बाद अब आते हैं हम 19 क्वेश्चन. इट इज बेस्ड ऑन गियर्स. गियर्स, आई विल फोकस ऑन गियर्स, बियरिंग, ब्रेक्स एंड क्लचेस, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्क्रीन पर आपके. मैच द टाइप ऑफ गियर्स विद देयर मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, है ना? देयर आर 2 कॉलम्स, टाइप ऑफ द गियर and description of the gear. 2 things are there. So we can match them. For helical gear, you know the teeth are inclined, and axes are parallel. So axis parallel, teeth are inclined to the axis. I think this is best match with the P best match with second option. And spiral bevel. So bevel, spiral means teeth are again inclined, and bevel means the angle, the shaft axes are not parallel. In bevel gears, the shaft axes are not parallel. So which option will be more suitable? Axis non-parallel and non-intersecting. Intersecting तो करते हैं bevel में, ये तो नहीं हो सकता है. Axis parallel and teeth are parallel to axis. ये तो इस पर में होता है और इस पर यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये तो इस पर की डेफिनेशन है, इस पर की डिस्क्रिप्शन है ना? ये आपकी जो है हेलिकल की हो ही गई है. Axis are perpendicular and intersecting, and teeth are inclined to axis. Yes, this is best match with the bevel. Axis are perpendicular, intersecting भी होते हैं, and teeth are inclined to the axis. Now, because it is a spiral bevel, that's why teeth are inclined. So Q is best match with 4. Third is hypoid. So hypoid में axes are non-parallel and non-intersecting. So R is best match with 1. Rack and pinion. The radius of the rack is infinite. Radius is a straight gear. It is a straight gear. So radius is infinite. So axes are perpendicular and uses for large speed reduction. For large speed reduction, the gears used are worm, and worm is not an option here in the left side. So axis parallel and one of the gears is infinite radius. Yes. So infinite radius means it is a rack. So this option best matched with 6. So S with 6. Okay. So let's see the options. My options are P2 Q4 R1 S6. P2 Q4 R1 S6. Check करिए. P2 Q4 R1 S6. So option A is correct. Option A is correct. Okay. So now I am moving to next question. This question related with the rivets or bolts. It is related with the bolts. So I will not take this question. I'm not. I will focus only on the bearings. Taking this bolt question. So 20 and 21, I am leaving.
22 is related to ball bearing. So I will take this question. Ball bearing operating at a load of 8,000 hours of life. So it is L10. The life of the bearing in hours when the load is doubled. Okay, load is doubled. There is a relationship L1 by L2 is P2 by P1 to the power K. This is a relationship for the rolling contact. So ball bearing is a rolling contact bearing again. So L1 is given. L1 is 8,000. So I can use 8,000 over here. L2 is unknown for me. And load is doubled. So P2 is 2 times P2 is 2 times P1. So I can use it 2P1 divided by P1. Load is doubled. So it is K is 3 for the ball bearing. P1 cancel out. So it is 2 to the power 3 is 8. So 8,000 divided by 8. 8,000 divided by 8 is 1,000. So 1,000 hours is the answer. So option D is correct. Very easy question. Simple relation L1 by life और load में जो relation होती है वो inversely proportional होते हैं, है ना, with power K से. मतलब life जो होती है वो inversely proportional होती है P power K से. So L1 by L2 can be written as P2 by P1 to the power K. You can solve this. So it is very easy question. Now move further. This question related to some pressure vessels. I am not taking this. Yes, this is a bearing question. Question 24. So I will take this. Natural feet general bearing of diameter 50. So D is given 50. Length is also given 50. So it is a L by D ratio is 1. So it is a square bearing. It is a square bearing. So operating at 20 revolutions per second. So our N is given 20 revolutions per second, RPS. If I want to convert it into RPM, then it is 1200 RPM. 20 multiplied by 60. ठीक है, तो जो भी मुझे यूज करना होगा, I will use according to the unit compatibility. है ना, always I will check the unit compatibility and I will use any one of them. Carries a load of 2 kilonewton. So W is 2 kilonewton. I convert it into Newton. So it is 2000 Newton. The lubricant used has a viscosity of 20 millipascal second. So mu is given 20 millipascal second. So millipascal second, I will change into megapascal second. So for megapascal, it will be 10 power minus 3 for Pascal. Then for megapascal, it is 10 power minus 6 again. So it is 20 into 10 to the power minus 9 megapascal second. For the unit compatibility, I am trying that force is in Newton and other dimensions are in millimeter. And time is in seconds. Time is in seconds. Be careful. Time is in seconds. So because time is in seconds, so RPM can be used in RPS. So this will be useful for us according to unit compatibility. So the radial clearance is 50 micrometer. It is micrometer. So radial clearance is C. C is 50 micrometer. Micrometer changes to millimeter. So 10 to the power minus 3 millimeter. 1 micrometer is 10 to the power minus 3 millimeter. So it is basically 0.05 mm. So radial clearance is available. Summerfield number. The Summerfield number for the bearing is. Now, question is asking about the Summerfield number. You have to calculate S. S is the Summerfield number. So the formula for the Summerfield number is mu times NS by P R by C whole square. It is the formula for the Summerfield number.
है ना? You may take ry in place of ryc. You can take d by c also. But if you are taking d by c, then d is diameter and c is diameter clearance. And if you are writing r by c, means r is the radius and c is the radial clearance. Be careful, है ना? ऐसा मत कर देना कि diameter ले लिया, इधर radial ले लिया. Same होना चाहिए. Radius है तो radial clearance और diameter है तो diameter clearance. So mu is viscosity. So viscosity is available 20 10 power minus 9 is the viscosity, and ns is the rpm. It is the not rpm, it is the velocity. So I will take velocity in rps, revolutions per second, because I have taken viscosity in megapascal second. यदि मैं viscosity को megapascal minute में convert करूंगा, then I can take n equal to 1200 for the unit compatibility. So ns is 20 over here divided by pressure. Pressure is not given, so pressure can be found by load upon area. So load is given, 2000 Newton is the load. So it is 2000 Newton is the load divided by area. And what is the area? Area is dl. Area is dl, diameter into length. So it can be found 2000 divided by diameter is 50, length is 50. It is a square bearing. So solve it. 0 0 cancel out. 5 4 are 20, and it is 0.8. So it is 0.8 megapascal or Newton per mm square. So in place of P, I can write 0.8. Now radius diameter is 50. So radius is 25. And clearance is 0.05, both are in millimeter. So this is my Summerfield number. Please solve it. कितना आ रहा है? Solve करके बताइए. संदीप है क्या क्लास में? 0.125. 0.125. Very good. So answer is 0.125. So B option is correct. B option is correct. ठीक है. तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन ही था. एक तरह से समरफील्ड नंबर पूछा है और उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं, है ना, प्रेशर को भी आप यूज निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से. सो आई एम नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बोल्टेड जॉइंट. सो आई एम लीविंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक ब्रेक. यस, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू ब्रेक. सो आई विल टेक दिस. सो it is a question related to block brake. Shown below has a face width of 300. Mean coefficient of friction 0.25. So mu is 0.25 over here. है ना, वहां पे हमारा mu viscosity है bearing में, और यहाँ हमारा mu जो है वो coefficient of friction है. Be careful. For an activating force of 400 Newton. So force is 400 Newton. It is acting at this end. It is acting at this end. The braking torque in Newton meter is. The question is asking about the braking torque. Braking torque. So we have to find the braking torque. So let the torque is capital T. So we have to find capital T. Okay. And capital T can be found by capital T. How can we find in the block brake? So in this block brake, this is a pulley, and there is a belt. So here the force is acting. So on this point, there will be some reaction force will be generated. So this is the reaction force, and it's the normal reaction. So with this 400 and with this R, so there will be equilibrium. So for equilibrium, summation of the moment about the fulcrum must be 0. So let I take the, let this point is A. So I am taking the moment about A. So moment about A must be 0.
In the block break, the moment about this fixed point must be 0. So let me take moment. So 400 is downward. So 400 into distance. Distance is, how much is the distance? 400 and 200. दोनों को plus कर दीजिए. So the total distance is 600. Total distance is 600. So the moment of this force is force into distance. So it is 400 into 600. Okay, and it is a clockwise movement. It is a clockwise movement about this point A. So let clockwise is negative and anti-clockwise is positive. This is my assumption. So I am taking it as minus sign plus the direction of R is upward. So distance of R is 200 only. This distance is 200 given in question, and it is the anti-clockwise movement. So it is positive. So R multiplied by 200. There is no any other force. Only two forces are acting. So this must be 0. So from this equation we can find R. So बताइए जरा R कितना आ रहा है? Please tell me what is R. 1200. 1200 है ना? So unit is Newton because it is a reaction force. So R is 1200 Newton. Now on the block break, हमको तो क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है. अभी तो रिएक्शन निकली है ना, अभी तो रिएक्शन निकली है, टॉर्क नहीं निकला है. तो टॉर्क निकालने के लिए this is the reaction. Due to this reaction, the friction force will be generated. So that friction force is mu times R. Friction force is mu times R. It is a limiting friction, mu R. So mu is given in question. Coefficient of friction is 0.25. Mu is 0.25 given. It is given. So 0.25. So let's first calculate the friction force. So friction force is given by mu R. So it is 0.25 multiplied by 1200. R is 1200. So बताइए कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 300. 300, and unit is Newton again because it is also the force. So unit is 300 Newton. So after finding the frictional force, we can find the torque, or you can say it is the braking torque or it is the frictional torque. So many names. So braking torque is given by braking torque T is given by friction force multiplied by radius of the pulley. Radius of the pulley. So diameter of the pulley is given 300. So radius of the pulley is 150. 300 by 2, 150 mm. So I can use it as mu n की value, mu r है ना, ये r ले लीजिए, mu r into small r. So mu r is 300 and small r is 150. इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है? यस मल्टीप्लाई करिए. 45,000. 45,000 यूनिट बताइए. न्यूटन mm. Because dimensions we have taken in mm, so unit is Newton mm, but the question is asking find the braking torque in Newton meter. Newton meter unit पे ध्यान दीजिए. So I will convert it into Newton meter. So it is I will divide by 1000. So it is 45 Newton meter. So this will be the answer. Let's check the options. So options are 40, 45, 60. So option C is correct. C is correct. Okay, so this question is now over. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? फर्स्ट वी हैव फाउंड द रिएक्शन, देन फ्रिक्शन फोर्स, देन
ब्लॉक ब्रेक का ये कंसेप्ट रहता है, ध्यान रखिएगा। ब्लॉक ब्रेक ना, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड दैट वैल्यू। सो next question. This question is related to piston rod. So piston rod is basically belongs to IC engines. तो IC engine तो वैसे सिलेबस में नहीं है, पर यहाँ फिर भी आ गया है। कैसे आ गया देखते हैं। Piston rod of diameter 20 mm, length 700. So diameter is 20, length is 700. है ना, both are mm. In a hydraulic cylinder, की वजह से आ गया है। Subjected to compressive force of 10 kilonewton. So W is 10,000 Newton. Due to internal pressure, the end conditions for the rod may be assumed as, अच्छा जो piston rod है वो fixed रहती है ना, तो end conditions जो rod की end condition है, that is guided at the piston end and hinged at the other end. Okay. तो रॉड की एंड कंडीशन दी है। अब आपने एंड कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि कई तरह की एंड कंडीशन होती है। एक होती है कि दोनों जगह पर वो, एक जगह पे वो फिक्स है और एक जगह पे वो फ्री है। दिस इज वन कंडीशन, है ना। अनदर कंडीशन इज वो एक जगह पे फिक्स है और एक जगह पे वो हिंज है। is hinged, it is hinged, it is fixed and it is fixed. So this is fixed free, this is fixed hinge. और एक कंडीशन और होती है in which both the ends are hinged. It is hinged, hinge here also and hinge here also. So it is hinge condition. And one more condition is there. आपने कॉलम थ्योरी में पढ़ा होगा ये कंडीशंस। तो कॉलम थ्योरी में आपने देखा होगा कि एक दिस इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज आल्सो फिक्स्ड, बोथ आर फिक्स्ड, है ना। सो दिस इज आल्सो फिक्स्ड, दिस इज आल्सो फिक्स्ड। सो फोर कंडीशंस ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आती है। फिक्स्ड फ्री, फिक्स्ड हिंज, हिंज हिंज, फिक्स्ड फिक्स्ड, ठीक है। तो इन कंडीशंस के लिए अब ये रॉड कितना बियर कर सकती है, तो आपने पढ़ा होगा इसमें एक कंसेप्ट आता है कॉलम थ्योरी में, यूलर्स लोड। यूलर्स लोड इज गिवन बाय n times pi square ei divided by l square. So here L is the length of the column. In our case, it is the length of the piston rod. So piston rod is basically behaving like a column in this question. So we will apply the column theory here. So it is n pi square ei divided by l square. Pi is constant, E is Young's modulus, I is moment of inertia. Is second moment of inertia. So piston rod is circular in nature. The cross section of the piston rod is circular. So I can be found by pi by 64 b to the power 4 is the formula for the second moment of inertia. E is the Young's modulus. It is given in our question, 200 gigapascal. So E is 200 gigapascal. Convert it into megapascal. So it is 10 to the power 3 multiplied megapascal. So it is converted to megapascal. The factor of safety for the piston rod is. So it is demanding that what is the factor of safety? It is asking about the factor of safety. So factor of safety can be found. Factor of safety can be found by load coming on the rod divided by load can be taken by the rod. Load कितना लोड वो बियर कर सकती है, कितना लोड उसमें आ रहा है ना। तो डिनोमिनेटर में हम इसको ले लेंगे कितना लोड आ रहा है, तो वी कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो व्हाट वी कैन डू, इट इज द यूलर्स लोड, so it is basically the crippling load
so that the piston rod will not buckle, buckling should not be there. So we first find the Euler's load. So here everything is clear. L is 700. It is given in question. L is 700. Young's modulus is given. Inertia can be found pi by 64 d. D is given 20. D is given. तो सबसे पहले तो inertia बता दीजिए. Inertia कितना आ रहा है? pi by 64, 20 to the power 4. Solve करिए. कितना? कितना आ रहा है inertia? Yes. कोई बता दो. इतने सारे पार्टिसिपेंट है मेरे साथ. देखो मैं देखता हूँ. 7853.98. वेरी गुड. 117 पार्टिसिपेंट हैं. 7853.98. यूनिट बताइए. यूनिट बोलिए. mm की पावर 4. mm की पावर 4 है Yes, ना. sir. इनर्शिया में mm पावर 4 होता है ना. ठीक है. इनर्शिया की जो यूनिट होती है सेकंड मोटर इनर्शिया की मिलीमीटर पावर 4. So it is millimeter power 4. Now come to this n. This n. What is this n? N is known as, इस n को एक नाम से जानते हैं. It is end fixity coefficient. It is end fixity coefficient. इसका नाम है end fixity coefficient. तो ये कैसे इसको डिटरमाइन होता है? It is determined with the help of end conditions. It is determined with the help of end conditions. So when this is the case, one end is fixed, one end is free. So n is considered 0.25. N is considered 0.25. पढ़ा होगा आपने कॉलम से, है ना? And one is fixed, one is hinged. What is the value of n here? बताओ कोई भी. Hinge, n equal to 1. Fixed, n equal to 4. और fixed hinge, n equal to 2. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. चारों कंडीशन में n की वैल्यू मेमोराइज होनी चाहिए आपको. ठीक है. फिक्स्ड फ्री में 0.25 होती है, फिक्स्ड हिंज में 2 होती है, हिंज में 1 होती है, और फिक्स्ड में 4 होती है. राइट. अब आप ये बताओ कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन लगेगी, है ना? क्वेश्चन को पढ़ो. इन चारों में से कौन सी कंडीशन हमारे क्वेश्चन में लगने वाली है? तो यहाँ लिखा हुआ है द एंड कंडीशंस. इसको इस लाइन को ध्यान से पढ़ो. द एंड कंडीशंस फॉर द रॉड may be assumed as guided at the piston end. Guided at the piston end. तो इसका मतलब ये हो गई फिक्स. ये तो हो गया फिक्स्ड. Guided at the piston end. It is fixed. And hinged at the other end. तो दूसरे एंड पे hinged है, तो फिक्स्ड हिंज्ड वाली कंडीशन लगेगी. फिक्स्ड एंड हिंज्ड. तो फिक्स्ड एंड हिंज्ड पे क्या कंडीशन है? n की वैल्यू कितनी है? 2. So we will use 2 over here. So we will calculate it. 2 pi is 3.14 whole square. Young's modulus is 200 10 to the power 3. Inertia is 7853.98 divided by L square is 700 square. Solve कर दीजिए. कितना आ रहा है? So it is the crippling load. इतने लोड को ये बियर कर सकती है विदाउट ट्रिपल. इससे ज्यादा होने पर ये पिस्टन रॉड ट्रिपल कर जाएगी. इसके आंसर क्या आ रहे हैं बताओ? यस. 63278.11. वेरी गुड. 63278.11. 0.11. So this is the crippling load, है ना? अब लोड आ कितना रहा है रॉड पर बताओ? लोड दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 न्यूटन, है ना? सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 10 किलोमीटर. सो 10,000. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए डिवाइड कर दो. 63278.11 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हो गया? डिवाइड करो. 6.3278
6.32। तो कौन सा आंसर आएगा फिर? 0.68, 5.62, 2.75, 11। तो कोई भी नहीं है इसमें। तो अब जब कोई भी नहीं है तो एक बार चेक करो अपनी कैलकुलेशन पहले तो कि आपने ये कैलकुलेशन ठीक किया कि नहीं। लेट मी चेक माय कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन चेक करो, अदरवाइज वी विल टेक द अप्रोक्सीमेट आंसर, है ना, सबसे नजदीकी आंसर जो हो सकता है। जैसे 6 पॉइंट समथिंग है और ये 5 पॉइंट समथिंग है, देन दिस कैन बी द आंसर। तो ये आंसर हो सकता है। जरा बताइए, एक बार चेक करिए कैलकुलेशन फास्ट। फास्ट कैलकुलेशन करें। क्वेश्चन नंबर इज 27। एक बार मैं भी अपनी कैलकुलेशन देखूं। 27, यस। तो पी की वैल्यू कितनी आई है आपकी? लोड की वैल्यू क्या आई है? 63278, 63278.11। तो ठीक है, बिल्कुल मेरी भी यही आ रही है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय 10,000 6.32 ही आया है। ठीक है, सही है। तो 6.32 इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेट आंसर दीजिए। तो अप्रोक्सीमेट आंसर इज 5.62। अप्रोक्सीमेट आंसर इज 5.62। So it is the, you will mark C। ऐसा भी करते हैं कभी कभी, है ना। और ये तो आते हैं, कभी ऐसे आते हैं कि अभी हमने यूलर थ्योरी लगा दी है ना, यूलर थ्योरी की जगह यदि हम रैंकाइन थ्योरी लगाएंगे, ठीक है, तो आंसर्स कुछ अलग आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगा लगभग। तो दैट्स व्हाई वी कैन गो फॉर द अप्रोक्सीमेट आंसर्स। तो चलिए, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू गियर सेट। सो आई विल टेक दिस। टाइम क्या हो रहा है? अभी तो है हमारे पास। A gear set has a pinion of 20 teeth. So Z1 is 20, and gear width is 40, means width is 40. नहीं, gear, अच्छा gear के teeth हैं. So it is Z2. Z2 is 40. The pinion runs at 30 revolutions per second. So it is the RPS. N is 30 RPS, revolutions per second, and transmits a power of 20 kilowatts. Power is given 20. And teeth are on 20-degree full depth. So pressure angle alpha is 20. Alpha is 20-degree full depth and have a module of 5. So module is 5. The length of the line of action is 19. The length of line of action LA is 19 mm. Line of action is 19. So this is the common data for the question 28 and 29. So we have to calculate the center distance for the above gear set. Center distance का formula होता है, small a is the center distance. It is given by module divided by 2 Z1 plus Z2. This is the formula for the center distance. So in this question, module is given 5 by 2. Z1 is given 20. Z2 is also given 40. Solve it. Solve करिए जरा इसको। 5 by 2, 20 plus 40. Option B. 150. So it is 150 mm. So option B is correct. हाँ, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। 28 तो बहुत इजी है, एक से छोटा सा फॉर्मूला है। Now the contact ratio of the contacting tooth is contacting ratio. आपको निकालना है CR, है ना, contact ratio। तो contact ratio कैसे निकलता है? Length of the arc divided by length of the arc divided by circular pitch. Circular pitch, है ना। This is the formula for the contact ratio. ध्यान रखिएगा, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा ऐसे। So this is the formula for the contact ratio, arc length divided by CP, and arc length is calculated by, arc length is line of action divided by pressure cos pressure angle divided by CP.
So line of action is given in question. It is 19 mm. It is 19 divided by cos alpha. Pressure angle is 20 degrees in this question. So 19 by cos 20 multiplied by circular pitch. Circular pitch you can find by pi times module. This is the formula for the circular pitch. So module is given 5, so it is 5 times pi. So I can use 5 times pi. Solve करिए इसको कितना 19 divided by cos 20 again divided by 5 pi. Solve it please. 1.288. 1.288. So answer is 1.21, 1.25, 1.29, 1.33. So I think option C is right. है ना? 1.29, 1.288. So it is approximated to 1.29. So option C is correct. So this question is also over. And resultant force on the contacting gear tooth. ये भी गियर का ही क्वेश्चन है. ये इसी क्वेश्चन का है ना? 28, 29 नहीं होना चाहिए. 28, 29 and 30. तीनों का कॉमन डाटा है ये. 28, 29 and 30. 30 also. So the resultant force on the contacting gear tooth is force. Force का फॉर्मूला बताइए. फोर्स कैसे निकलता है बताओ. फोर्स का फॉर्मूला कल बता चुका हूं. गियर के फोर्स निकाल के कल निकाला था ना. रेडियल फोर्स भी निकाला था, टेंजेंशियल फोर्स भी निकाला था. 2mt/d. 2mt/d. वेरी गुड. तो ये फॉर्मूला किसका है? टेंजेंशियल फोर्स का है. सो इट इज 2mt/d. अब mt आप कैसे फाइंड कर लोगे? पावर इज गिवन, rps इज गिवन, तो यू कैन फाइंड पावर इक्वल टू 60 10�6 into rpm. अब ये आरपीएस दे रखा है तो इसको आरपीएम में कन्वर्ट कर देते हैं. 1200 आरपीएम हो गया. 30 × 60 1800 हो गया. 1800 आरपीएम. सो इट इज 1800. नहीं पावर हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है. टॉर्क इज 16 × 6 into पावर. पावर इज गिवन हाउ मच? पावर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 20 किलोवाट. सो दिस विल बी 20. फिर से लिखता हूँ 60 10⁶ into 20 divided by 2 pi n. n is 1800. इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर न्यूटन mm में आ जाएगा. टॉर्क कितना आ रहा है? टॉर्क कितना आ रहा है? 60 10⁶ into 20 divided by 106 103.29. 106 103.29 है ना. तो ये टॉर्क हो गया. अब टॉर्क आ गया तो हम फिर पीटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से. तो पीटी कैन बी फाउंड बाय 2 times टॉर्क 106 103.29 डिवाइडेड बाय डी. डायमीटर कितना है हमारे गियर का? बताओ जरा. डायमीटर कितना है? डायमीटर कैसे निकलता है? डायमीटर दिया नहीं है. डायमीटर निकलता है mz. अब m की वैल्यू कितनी है? 5. और z की वैल्यू कितनी है बताओ? 20 लोगे या 40 लोगे? z की वैल्यू 20 है ना. 20 लेने का रीजन बताओ. बिकॉज Pinion is weaker. pinion is weaker. Very good है ना. Pinion is weaker. So we will calculate the force taken by the pinion. So it is 10 this value divided by mz. कितना हो गया? 24 × 80. सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है. Resultant force. आंसर बताइए रिजल्टेंट फोर्स का. सॉल्व करिए. सिर्फ 40 से भाग देना है और क्या है. 2/80 है तो इसमें 40 से डिवाइड करना है केवल. जो भी आपका टॉर्क आया था तो कितना आ रहा है? आंसर तो 80 नहीं आएगा. नहीं 80 नहीं आएगा. मॉड्यूल तो 5 है ना. मॉड्यूल मैंने 4 लेके कर दिया है. 20 × 5 100 आएगा ये है ना. मॉड्यूल 5 है नॉट 4. ऑप्शन बी. 100 से डिवाइड करना है इसको. तो
तो 100 से डिवाइड के कौन सा ऑप्शन आ रहा है? E. डी। डी नहीं आएगा, फिर से करो, डी नहीं आएगा। आपका टॉर्क ठीक है, उस टॉर्क को आप 50 से डिवाइड कर दो बस, 2/100 हो गया ना, तो 50 से डिवाइड कर दो, यानी कि आप ये बता दो मुझे 101 106 103 डिवाइडेड बाई 50 ये कितना आ रहा है ना। डायमीटर 100 हो गया तो रेडियस 50 हो गई ना, तो रेडियस से डिवाइड करोगे तो आपको फोर्स आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 106 103 डिवाइडेड बाई 50, हाउ मच इट इज कम? 2122.06. 22 क्या 21 फिर से बोलिए। 2122.06. 212.06. 2122.06. 2122.06 ये आ रहा है। ये अराला 1016. हाँ ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है। तो सही ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया? पीटी। ये पीटी हो गया हमारा, है ना। अब पीआर निकालना जरा, पीआर कितना हो जाएगा? पीआर होता है पीटी tan अल्फा, तो अल्फा हमारे में 20 है, तो जरा निकालना पीआर। पीटी tan अल्फा कर दो, कितना आ रहा है? 10 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ रहा है बताओ। 772.366. 772.36। 366. तो देखो ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स, ये हमारा रेडियल फोर्स, तो फिर हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? क्वेश्चन तो हमसे रिजल्टेंट निकलवा रहा है ना। इसका अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे सर, पीटी प्लस बिल्कुल पीआर. सही, बिल्कुल सही। पीटी स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करिए। पीटी भी आपके पास है, पीआर भी आपके पास है। 2258.24. 2258.24 24. बस ठीक। अब मैच कर लीजिए आंसर, कौन सा ऑप्शन आएगा? C. सी इज द राइट आंसर है। बी बता रहे थे आप, बी नहीं आएगा, इट इज सी। सो 2258 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इट इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर, है ना। आफ्टर 10 minutes or 15 minutes we will again meet in the next lecture. सर अभी लीव मत करिएगा अच्छा क्या हुआ? सर, 5 मिनट रह गई है मेरी सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, आपका नाम बताइए। शशांक उपाध्याय सर। शशांक उपाध्याय, अच्छा अच्छा ठीक है। चलो मेरी तरफ से मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। लीव नहीं कर रहा हूँ मैं, पर आप टाइम से आजा शुरू में ही आ जाया करो शशांक, शुरू में ही ज्वाइन कर लिया करो। सर थोड़ा सर घर पे आप थोड़ा इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। चलिए, तो अब आप लीव हो सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज मैं लीव करता हूँ, है ना। अभी भी लगे ज्वाइन आफ्टर 10 minutes, है ना। जब तक थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, आप लीव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, मैं तो इसको अब फिलहाल म्यूट। शशांक मुझे इन्फॉर्म करना जैसे ही आपका टाइम। सर जी सर, बिल्कुल।
कर दीजिए सर, लीव कर दीजिए, हो गया।